Hello, dear students. Today's topic is The Road Not Taken. It's a poem by Robert Frost. Robert Frost. Actual name was Robert Lee Frost, born in 1874 and died in 1963. Was an American poet born in San Francisco, California. Frost attended a high school in Lawrence, Massachusetts, and began writing poetry. Frost continued to write poetry, but he was unsuccessful at publishing his work. Seeking better literary opportunities, the Frosts sold their farm and moved to England in 1912. In England, Frost achieved his first literary success. His book of poems, A Boy's Will, 1913, was printed by the first English publisher that Frost approached. The work established Frost as an eminent poet. His second collection, North of Boston, was published in 1914 and also won praise. He won the Pulitzer Prize for poetry 4 times, in 1924, 1931, 1937, and in 1943. He wrote simple but insightfully about common ordinary experiences. In this poem, the speaker was walking through a forest whose leaves have turned yellow in autumn, comes to a fork in the road. The speaker, regretting that he or she is unable to travel by both roads, stands at the fork in the road for a long time and tries to see where one of the paths leads. However, the speaker can't see very far because the forest is dense and the road is not straight. The speaker takes the other path, judging it to be just as good a choice as the first, and supposing that it may even be better option of the two, since it's grassy and looks less worn than the other path. Though now that the speaker has actually walked on the second road, he or she thinks that in reality the two roads must have been more or less equally worn in. Reinforcing this statement, the speaker recalls that both roads were covered in leaves which had not yet been turned black by foot travelers. The speaker claims that he or she is in fact just saving the first road and will travel it at a later date, but then immediately contradicts him or herself with the acknowledgement that in life one road tends to lead onward to another. So it's therefore unlikely that he or she will ever actually get a chance to return to that first road. The speaker imagines him or herself in the distant future, recounting with a sigh the story of making the choice of which road to take, speaking as though looking back on his or her life from the future. The speaker states that he or she was faced with a choice between two roads and chose to take the road that was less traveled, and the consequences of that decision have made all the difference in his or her life. The poem Road Not Taken is symbolically very meaningful poem. The road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings with that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret it
but cannot go back on it. So we must be wise while making choices. The poem is written in a rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem is A B A A B. First, third, and fourth lines rhyme with each other in each stanza, and line number second and line number fifth rhymes with each other. There is symbolism in the poem, two roads which represents two or more choices in one life. There is anaphora and repeated at the beginning of lines 2, line 3 and line 4. There is alliteration, wanted where sound is repeating. There is repetition, ages is repeated many times, two roads diverged in a wood. This sentence is repeated in stanza 1 and then stanza 4. The poet or the narrator says that once he was walking down the road and reached a fork. He could walk over one of the paths only. He took time to choose the right path. He inspected them to decide which was the better option and then chose the one which seemed less walked over. He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk it over. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. He felt that his future depends on the choice that he made. प्यारे बच्चों, ये पोइम द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक पोइम है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। बाद में अमेरिका को छोड़ करके बरतानिया शिफ्ट हो गए और बरतानिया पहुंचने के बाद ही एक सक्सेसफुल राइटर के तौर पे उभर आए। इन्होंने प्यूजर प्राइज़ 4 दफ़ा जीता है, 1924 में, 31 में, 37 में और 43 में। रोड नॉट टेकन ज़िंदगी के बारे में एक पोइम है, ज़िंदगी के फैसलों के बारे में पोइम है कि जब हमें एक ऐसा दौर आ जाता है ज़िंदगी में, ऐसा मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में जहाँ पे 2 चॉइसेस हमें मिलती है और हमारे पास एक ही चॉइस लेने के लिए होती है और हम काफ़ी सोचने के बाद कोई नतीजा निकाल करके लेते हैं कि मैं जी ये वाला चॉइस ले लेता हूँ। उसके रीज़न्स होते हैं मैं ये क्यों लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका वालिद आपके लिए एक चप्पल, एक जूता ले आता है और ये बताता है कि दोनों में से चूज़ कर लो कि कौन सा चाहिए। एक जो है जो आप नहीं लेंगे वो हम दुकानदार को वापस ले लेंगे। तो आप सोचते हैं कि कौन सा मौसम चल रहा है, जूते का या चप्पल का। अच्छा, आपको अगर चप्पल चाहिए तो क्यों चाहिए, जूता चाहिए तो क्यों चाहिए, और आप एक बहुत ही गहरी सोच के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा रख लेता हूँ। इस तरह जो है, इस तरह की चॉइसेस ज़िंदगी में हर मोड़ पे हर वक्त आ जाते हैं जहाँ पे इंसान सिलेक्ट करता है। आपको घर वाले भेजते हैं साबुन लाने के लिए तो दुकानदार आपको चॉइस दे देता है कि मेरे पास एक लक्स साबुन है, एक लाइफ बॉय है या एक और कोई है, तो आप चूज़ कर लेते हैं कि कौन सी साबुन ले लो। तो आप सोचते हैं कि अगर मैं ये लूँ तो क्यों लूँ। ठीक, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान चॉइस कर लेता है कि मुझे कौन सा चीज़ जो है वो चाहिए। और ये पोइम जब ये एक दिन जंगल में चला जाता है और ऑटम का मौसम था, पत्ते बिखरे हुए थे ज़मीन पे और एक चलते चलते एक दोराहा आ गया जहाँ पे रास्ता जो है 2 हिस्सों में बंटता था। तो ये डिसाइड करता रहा कि दोनों में से कौन सी जो है वो राह में इख्तियार करूं। तो ये कहता है कि मैंने वो वाली राह इख्तियार की जहाँ पे ये
घास ज़्यादा थी, लोगों का चलना बहुत कम कम हुआ था, और जहाँ पे पत्ते बिखरे हुए थे। और फिर आज जो कुछ मैं बन गया हूँ, ये उसी चॉइस की बदौलत है जो मैंने उस दिन की है। और ये कहता है कि इंसान जो है वाइजली चूज़ करना चाहिए, काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी सोच विचार के बाद कोई जो है नतीजा इंसान ले लेना चाहिए ज़िंदगी में। तो ये कहता है कि ऐसे ही आंखें बंद करके अगर कोई फैसला किया जाता है तो बाद में पूरी ज़िंदगी इंसान पछताता है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। ठीक, आपके घर वाले आपके लिए चॉइस रखते हैं कि मेडिकल ले लो या नॉन मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग पढ़ो या डॉक्टरी पढ़ो, ठीक, या कोई और चीज़ पढ़ो। तो आपके लिए ये चॉइस बनती है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। और इसी तरह के फैसलों के बारे में ये पोएम है। ये कहता है कि हर एक फैसला जो इंसान को करना चाहिए, काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ज़िंदगी जो होती है वो मुनहसर होती है उन फैसलों पे जो आप ज़िंदगी में कर लेते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।